the very first thing I explained was that metals जो होते हैं they like to lose electrons. उसकी reason भी मैंने बताई थी कि उनका nucleus इतना positive नहीं होता, तो the electrons are not really attracted to them and they tend to lose electrons kind of easily. And non-metals जो होते हैं वो जो बिल्कुल राइट साइड पे होते हैं non-metals in the periodic table और उनके protons काफी ज्यादा होते हैं, they always have a very strong attraction for electrons. अब ये कि अच्छा अब ये कि you have metals and I told you कि let's say if you have a bunch of metals and all these metal atoms they started losing electrons, so initially the electrons are just roaming around, but what would happen is that the delocalized electrons and the positive ions they would all start attracting each other क्योंकि वो oppositely charged होते हैं, they all metals होता है वो अपने बाहर वाले electrons को तो इतना strongly attract ही नहीं कर रहा होता, so it's always losing electrons. ठीक है, and those electrons they form this sea of free moving electrons that are kind of in, I mean they're jumping around, they're in the middle of the structure. ठीक है, just probably आपको नजर आ रहा होगा. So they would be moving around, they would be delocalized का मतलब है they're free moving. And अच्छा, हाँ जी, मुझे नहीं पता था. चलो ठीक है, पता नहीं कैसा. चलो ठीक है, उसका कोई इशू नहीं है. वो मेरे बच्चे होते हैं तो फिर उनको ना वो पीछे फिर छलांगे लगा रहे होते हैं, तो राइट नाउ दैट्स नॉट एन इशू. अच्छा, so you have positive ions and free moving electrons and they're all roaming around, and negative electrons and positive ions they attract each other. और फिर उसके बाद है कि giant metallic lattice फॉर्म होता है. लैटिस किसे कहते हैं? I told you कि metal को describe करने के लिए ना you never use the term molecule. ठीक है, a lot of people make that mistake कि वो molecule लगे होते हैं कि जी इसका molecule lattices are lattices. ठीक है, उनके लिए कभी भी मॉलिक्यूल का वर्ड यूज ना करना. एंड द जाइंट स्ट्रक्चर्स उसका कोई लिमिट नहीं होता. ठीक है, इट्स दे ऑल इंटरकनेक्टेड. उसके अंदर 1000 आयंस भी हो सकते हैं मेटल के, उसके अंदर 10,000 भी हो सकते हैं. ठीक है, 1 बिलियन हो सकते हैं. सो देयर कुड बी लॉट्स ऑफ मेटल आयंस एंड लॉट्स ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑल स्टिकिंग टू ईच अदर. सो दैट इज द पॉजिटिव मेटल आयंस इन अ सी ऑफ फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स. ये मैंने कहा था स्पेसिफिकली डिस्क्रिप्शन व्हेन यू आर आस्क्ड. अच्छा, रिमेंबर केमिस्ट्री के अंदर, और ये मैं बार बार स्टेट कर रहा हूं, अभी हम पास पेपर्स भी करेंगे. केमिस्ट्री के अंदर केमिस्ट्री इज अ साइंस सब्जेक्ट. उसके अंदर आपने कहानियां नहीं लिखनी होती. ठीक है, यू हैव टू बी, योर आंसर्स हैव टू बी प्रिसाइज, दे हैव टू बी टू द पॉइंट एंड दे हैव टू बी साइंटिफिक. ठीक है, मतलब इस स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करने के लिए यू कुड हैव यूज किसी भी किस्म की इंग्लिश यूज कर सकते हो, बट स्टिक टू व्हाट्स रिटन ओवर हियर. कि लैटिस है तो लैटिस ही लिखो. ठीक है, उसको किसी और तरीके से किसी और वर्ड्स के अंदर डोंट ट्राई एंड डिस्क्राइब दैट. सो इट्स अ लैटिस ऑफ पॉजिटिव मेटल आयंस इन अ सी ऑफ फ्री मूविंग डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स. एग्जैक्टली आपने अगर किसी ने कहा ना जायंट मेटालिक लैटिस डिस्क्राइब करो, तो यू हैव टू एग्जैक्टली वर्ड डिटो ये कॉपी करना है. ठीक है, मतलब एक दो चीजें आगे पीछे कर सकते हो लेकिन डोंट यूज योर ओन वर्ड्स. और अट्रैक्शन क्यों होती है? पॉजिटिव मेटल आयंस एंड फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स दे ऑल अट्रैक्ट ईच अदर. अच्छा, द अदर थिंग इज कि यू हैव, we discussed the strength of metal. Okay, why is the metallic lattice? Some metals are stronger, some metals are kind of weaker. तो उसके अंदर हमने किया था कि अगर डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो पॉजिटिव आयंस को अट्रैक्ट करेंगे और पॉजिटिव आयंस इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेंगे, सो अट्रैक्शन वुड बी ग्रेटर. So there are three things. One is कि if the positive charge on the ion is greater, तो metallic lattice stronger होगा. अगर delocalized electrons ज्यादा होंगे, if the metal likes to lose electrons a lot, for example aluminium is in group 3 जो होता है वो ज्यादा electrons lose करता है, तो तब भी delocalized electrons ज्यादा होंगे. and one universal law is कि जितना छोटा ion होगा या छोटा atom होगा उतने strong bonds बनाएंगे, क्योंकि छोटे atoms जो होंगे ना they'll be tightly packed together and they would be close to each other, so they're going to have more mutual attraction. बड़े बड़े atoms और बड़े ions जो होते हैं ना, bigger ions, they don't really attract each other that much. As a next is okay, the general properties of metals. Okay, they have high melting points, and they, because large
amounts of energy is needed to break the metallic lattice. They're stuck in their place. But metallic lattices, ये जो iron है ना, ये इतना strongly attract हो रहा है, it can't slip and slide, it can't jump around, it can't move around. So it's stuck in its place. ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा vibrate कर सकता है. The electrons are all attracting. The electrons are all attracting them, so they can't really move that easily. So you need a large amount of energy to melt them. और उसके अंदर फिर हमने पढ़ा था कि not all metals they actually have high melting points. Relative comparison compared to other substances, they usually have high melting points, but one of them is mercury. कि mercury is an exception कि it's a liquid. The other one is कि group 1 के जो metals होते हैं ना, they usually have low melting points क्योंकि positive charge कम होता है. तो इतने कोई स्ट्रांग नहीं होते, उनके मेल्टिंग पॉइंट्स 100 से कम होते हैं. ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं दे हैव वेरी वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट्स. ये लेकिन हम डिटेल में जब मेटल्स का चैप्टर पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे. फिर यू हैड गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे आर फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि चार्जेस घूम रहे हैं इधर उधर. सो दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. सो दे आर फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स. जितने ज्यादा फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होगा. सो कॉपर एंड एल्यूमिनियम, especially aluminium, that's used in high voltage transmission. बल्कि इधर वो आगे क्योंकि कॉपर लिखा हुआ है तो I'm even going to cut that out. ठीक है, साइड पे लिख देते हैं कि कॉपर होम्स के अंदर यूज होता है. ठीक है, बिकॉज इट्स अ चीपर वर्जन. एल्यूमिनियम इज काइंड ऑफ एक्सपेंसिव. और आपकी जो इवन ये मोबाइल के जो चार्जेस होते हैं ना, उसके अंदर अक्सर मोबाइल के चार्जेस दे डोंट फंक्शन वेल. तो वो डिपेंड करता है कि वायर कौन सी डली हुई है. कभी वो सस्ती वाली डली होती है, कभी महंगी वाली. एल्यूमिनियम की अगर होगी, इट्स अ वेरी गुड कंडक्टर. तो दोस चार्जेस दे वर्क वेरी वेल क्योंकि एल्यूमिनियम जो है ग्रुप 3 में इट लूजेस 3 इलेक्ट्रॉन्स. इट्स अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. एंड इफ दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेल, दे आल्सो कंडक्ट हीट वेरी वेल. फूड कंटेनर्स वगैरह सारे इसी से बने होते हैं. व्हाई? बिकॉज दे हैव फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स. मतलब हीट कंडक्शन भी ना कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करके, ये इलेक्ट्रॉन अगर ये एनर्जेटिक हुआ है, इसको यहाँ से लेट्स से यहाँ पे आग लगी हुई है एंड दिस इलेक्ट्रॉन गेन्स एनर्जी, तो वो एकदम से जंप करके इट्स फ्रीली मूविंग, वो किसी को भी जाके ट्रांसमिट कर सकता है. uh, वैसे यूजली हीट कंडक्शन किस तरह होती है कि एक पार्टिकल जो होता है वो सॉलिड में वाइब्रेट कर रहा होता है, फिर वो साथ वाला वाइब्रेट करना शुरू कर देता है. ठीक है, तो दैट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग, फिर वो उसके साथ वो बड़ा स्लो प्रोसेस होता है. ठीक है, इंसुलेटर्स के अंदर यूजुअली इस तरह हीट कंडक्शन होती है. मेटल्स के अंदर होता है इलेक्ट्रॉन स्पीड में मूव करे, दे ऑल ओवर द प्लेस. यहाँ से उसने एनर्जी गेन की, साथ ही जाके उसने उधर जाके किसी को हिट किया, उसको ट्रांसमिट कर दिया. ठीक है, सो मेटल्स दे कंडक्ट हीट वेरी वेरी वेल. और जितने ज्यादा डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी अच्छी हीट कंडक्शन होगी. अच्छा, एनीवेज, इसमें फिर एक जो हमने पॉइंट रखना था, दैट वाज कि मेटल्स आर मैलेबल. ठीक है, दैट्स अनदर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज कि मेटल्स आर मैलेबल एंड डक्टाइल. सो you have metals and they are malleable. Malleable means कि they can be reshaped by simply hammering. You can't, मतलब कट नहीं करना पड़ेगा. You can just hammer it and you can change the shape. And ductile means you can make wires out of them. Majority substance से you can't make wires. For example, wood से आप वायर नहीं बना सकते, या मार्बल से आप वायर नहीं बना सकते, सो या सॉल्ट से आप वायर नहीं बना सकते. So you have a flexible wire that can be coiled, that can be turned around. So ductile means can be drawn into wires. Very few substances have this property, have this. So the question is, why are they malleable? The reason they're malleable is, let's say you have a metallic lattice, or इसके अंदर there are bunch of metal atoms, and they're all and they're delocalized electrons. The metallic lattice, the atoms, they all lose electrons, so they become positively charged, all of them.
and the electrons are roaming around. तो electron बीच में आया, तो जैसे ही वो electron आएगा, the electron is going to pull the other atom, नीचे से इसको भी खींचेगा अपनी तरफ, ठीक है. ये वाला electron इसी तरह इसको खींचेगा अपनी तरफ. So the electrons are going to pull the structure, they're going to pull or attract all of the, तो वो metallic lattice बन ही जा रहा है, ठीक है. और इसे एक को भी फिट कर देते हैं यहाँ पे. अच्छा, अब attraction है क्यों? क्योंकि the electrons are mutually attracting all the other metal atoms. They're mutually attracting them. One second. अच्छा ठीक है, ये metallic lattice है. And the electrons are mutually attracting all the positive ions. ठीक है, बीच में electrons है. Now what's going to happen is कि when I hammer it, तो ये स्ट्रक्चर टूटता क्यों नहीं है? बहुत सारे substances जो होते हैं they're brittle. Brittle का मतलब है they break. मार्बल को अगर आप हैमर करोगे it's going to break. Most substances they actually break. Wood को अगर एक bend करोगे तो वो भी break हो जाएगा. So why doesn't this break? So when a force is applied, let's say you're hammering, ठीक है, so एक hammer लेके ना somebody is hammering it. So when a force is applied, तो ये जो ions है ना they start slowly they start sliding. And let's say this slide, and this is what happens. ठीक है, they हल्का सा slide करके because you have applied a force. So लेकिन what happens to the attraction? मतलब look at what's happening to the attraction. If I make this bigger, the attraction is still there. उससे कुछ भी नहीं हुआ. भले ये इलेक्ट्रॉन देखो, ये इलेक्ट्रॉन अभी भी बीच में फंसा हुआ है ना. इसको कोई और कलर कर देते हैं. Uh, let's say look at this electron. This electron would still be attracting all the positive ions around it. तो उसके स्लाइड होने से ना कोई फर्क नहीं पड़ा. ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसको भी ब्लैक कर लेते हैं. So this electron over here, it's again still present in the middle. और वो पॉजिटिव आयंस को अट्रैक्ट कर रहा है. So if this structure slips because you're hammering it, आप उसको reshape भी करो, the electrons are still present in the middle and they're still attracting all the positive ions. तो वो reshape होने के बाद भी ना the structure is still intact. I mean, not the structure is intact, but the force of attraction is still intact. Is this point clear? Noor, is this clear? बाकियों को is this point clear? राफे clear है? उधर उस पे चैट के अंदर लिख लोगे. मिनाहिल, is this clear? Yes, sir. ठीक है. अच्छा, so the point is कि the structure, the metallic lattice does not, I mean, even if you hammer it, वो change भी हो जाए, mold भी हो जाए, ठीक है, it's still going to be the same metallic lattice. The force of attraction would still be there and present. तो ये मतलब वापस इस साइड पे भी slip कर जाए structure, आप force apply करो, hammer करो, the electrons are still there and the electrons would be in the middle and they would be roaming around in the middle and they would still be attracting. So the point is, when a force is applied, और इसकी description, वो पूछेंगे कि ये क्यों malleable है, क्यों ductile है. So when a force is applied, the layers of metal ions or layers of positive metal ions, they slide. And there is no change in the mutual force of attraction between positive ions and delocalized electrons. And delocalized
electrons. So वहां पे ना कोई change नहीं आ रही, ठीक है? Hamza, is this clear? Yes, sir. Achha, then there's achha, previously we had studied ionic compounds. Ionic compounds के अंदर ना ionic compounds were brittle. For example, marble is an ionic compound. Your normal table salt NaCl, that's an ionic compound. They are brittle. Brittle का मतलब if you have a crystal, you apply a force, it breaks. It breaks into tiny pieces. So उसके अंदर the situation was actually kind of different. तो वो भी मैं साइड पे रिलेट कर दूं कि ठीक है वो हमने डिस्कस किया था. आई मीन दैट्स डेफिनेटली नॉट मेटल्स. उसके अंदर होता था यू हैड metals and non-metals. The metal would lose electrons, and the non-metal, on the other hand, would gain electrons. So there would be a positive ion and there would be a negative ion, and they would be attracting each other. Okay, this was what ionic bonding was. Uh, and there would be a bunch of positive ions and a bunch of negative ions. Metal ions positive honge, non-metal ions they're gaining electrons, so they are negative. ठीक है बल्कि I think we had, let me go back, कहीं ऊपर हमने डिस्कस भी किया था तो उधर हम एक दफा फिर से हाँ यहाँ पे प्रॉब्ली अच्छा यहाँ पे प्रॉब्ली हमने डिस्कस किया था कि इन आयनिक कंपाउंड्स व्हेन वी आर स्टडीइंग आयनिक कंपाउंड्स जिन लोगों ने मिस किया आई कैन कवर दैट ऑन सैटरडे फॉर देम. आयोनिक कंपाउंड्स में था कि you had a bunch of positive ions and negative ions. Metal ion positive, non-metal ion negative. इसके अंदर ना the lattice is like this. I mean, it's also a giant lattice. लेकिन उसमें positive ion attracting negative ion attracting positive ion, and so on. It just continues like that. इसके अंदर होता था कि you can't if you apply a force, let's say इस side से ना there's a force being applied. What happens to the lattice? Ions they slip. ठीक है? So let's say these ions they slip. Now, if these ions slip, what you would see is that the sodium ion is now right in front of this other sodium ion. The positive ion and positive ion क्या करते हैं एक दूसरे को? They start repelling each other. And this negative ion is now right in front of this other negative ion. So negative ions and negative ions they repel each other, which is why the whole structure would actually collapse. It would break. Okay, because the force that was initially a force of attraction has now become a force of repulsion. So the structure has to, I mean, it can't afford slippage. Like if you're applying a force to a salt crystal, the ions they must not slip, because if they slip, the force of attraction actually changes into a force of repulsion. So let's bring these ions back. Okay, let's say you didn't apply the force and they're back. Now again, all of a sudden, the force of repulsion is gone because there's a negative ion in front of a positive ion next to a negative ion. So you get the point of why ionic compounds they're brittle. Okay, ionic compounds can't afford this. They can't afford hammering. Okay, hammering would cause slippage in the lattice, and if the ions they slip or they rearrange in a bad way, then immediately they would start repelling each other instead of attracting each other. Okay, is this point clear? Hamza, is this clear? Rafi, is this clear? Yes, sir. Okay, Qasim, is this Yes. clear? Okay. अच्छा, so किधर चला गया? अच्छा, so coming back to this, ये मैंने यहाँ पे बस explain करना था. I'll just remove this. ये मैंने बस वो दिखाना था कि why other lattices या other structures जो होते हैं they can't maintain the force of attraction. Either force of attraction जो है ना maintain रहेगी. Uh, even if the ions slip, the electrons etc. they would still be attracting the positive ions, and that's it. So nothing happens to the force of attraction. It's still a force of attraction, which is why the whole structure still remains intact. Actually, this is metals. Uh, Now, apart from this, we're also going to cover the structure of alloys. Now, alloys are kind of like metals. I mean, they're exactly like metals, except for a few things. Everything would be exactly the same as
metals. So alloys, first thing, they are a mixture, and they're a mixture of a metal, or you can call it a mixture of metals. ठीक है, mixture of two different metals, or a metal with an impurity. With an impurity. Now, the first thing about metals is when you study about mixtures of metals, everything, and especially your everyday metals that you use, pure metals are kind of really bad because of this. Pure metals are very malleable and uh, they're very ductile and they're soft. ठीक है? For example, copper wire है. You must have seen copper wire को दो तीन दफा ना अगर आप if you try and bend it, it breaks. Like if you have a steel wire, ठीक है? If somebody has seen a guitar wire or any steel wire break नहीं करती, ठीक है? That's kind of really strong. तो pure metals जो होते हैं ना, they're very malleable, and you don't like that. You don't want that. You don't want them to easily. मतलब आप चेयर पे बैठे हो स्टील की और वो आपके वेट से ना if it changes shape या bend हो जाती है, तो that's not a very good chair. You don't want that. You want the metal to be strong. So pure metals have an issue. They are too malleable and ductile. So for everyday use, you can't really not suitable for everyday use. कोई फायदा नहीं होगा everyday use में कि they're going to be मतलब आप चेयर्स नहीं बना सकते, टेबल नहीं बना सकते कि उसके ऊपर आप गलती से जोर लगा दिया तो वो रीशेप हो जाएगा या डी शेप हो जाएगा. सो दे काइंड ऑफ प्योर मेटल्स आर बैड. स्टील का रूलर होते हैं जैसा वो बेंड हो जाते हैं. यू डोंट वांट देम टू बेंड. गोल्ड की ज्वेलरी होती है, दैट्स नॉट मेड आउट ऑफ प्योर गोल्ड. ठीक है, द रीजन इट्स नॉट मेड आउट ऑफ प्योर गोल्ड इज कि इफ यू मेक ज्वेलरी आउट ऑफ प्योर गोल्ड, इट्स गोइंग टू बी टू सॉफ्ट. वो हाथ से ही ना आप उसको आराम से ना रीशेप कर सकते हो जैसा कॉपर की वायर को कर सकते हो. तो कॉपर की वायर इट्स वेरी सॉफ्ट. तो इसलिए एवरीथिंग इज मेड फ्रॉम एलॉयज मोस्ट ऑफ द टाइम. एलॉयज और एलॉयज और मेटल्स के अंदर सिर्फ एक प्रॉपर्टी का फर्क है, मेनली एक प्रॉपर्टी, एंड दैट इज दैट एलॉयज आर स्ट्रॉन्गर. That's it. They're stronger than pure metals. So alloys are stronger than pure metals. That's the only property that's actually different for alloys. Otherwise, all other properties are the same. Strength के अलावा ना, all other properties are same. जिसमें क्या आ जाता है all other properties में, मतलब electrical conductivity, high melting points, etc. और स्ट्रक्चर भी सेम है. अच्छा, stronger का मतलब है the way stronger could be interpreted is stronger can be stated as less. I mean, they're basically less malleable and less ductile. So they're less malleable and ductile. अच्छा, first thing, structure of an alloy. How would the structure of an alloy, पहले तो alloys कुछ everyday alloys पढ़ लेते हैं. Number one, there's steel. ठीक है, steel is a mixture of iron plus carbon. कार्बन मिक्स हुआ होता है इसके अंदर, स्टील के अंदर. और इसमें याद रखना कि तो वो बाद में देख लेंगे. इसमें तीन टाइप्स के स्टील होते हैं. देर इज हाई कार्बन स्टील. That's number one.
अब high carbon steel, it's given different names. It's called pig iron. ठीक है, it's a very raw form of steel. It's known as cast iron, sometimes known as wrought iron. ठीक है, these are all the names given to high carbon steel. High carbon steel के साथ मसला ये कि it's not good. It's too strong. ठीक है, कि मतलब आपने स्ट्रांग करना था, लेकिन इतना भी स्ट्रांग नहीं करना था कि वो बेंडी ना हो। ठीक है, तो मतलब आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, जैसे कार बॉडीज बनानी है। Now, if you want to make a car, you want the steel to be strong, but not that strong कि वो बेंडी ना हो। कि अगर एक्सीडेंट होगा तो एक्सीडेंट में आप चाहते हो कि कार जो है ना वो एज अ कुशन बिहेव करे। ठीक है, विच इज वाई मॉडर्न कार्स दे क्रम्पल। आई मीन मॉडर्न कार बॉडीज जो होती है ना, दे एक्ट लाइक फोम। ठीक है, मतलब उनकी जो आउटर बॉडी होती है ना, वो उसी तरह कंप्रेस होती है जैसे फोम की तरह कंप्रेस होती है, बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स ऑल द इम्पैक्ट। और वो जो अंदर पैसेंजर्स बैठे होते हैं, दे डोंट। सो सो लॉट ऑफ टाइम्स यू वांट द मेटल टू बी स्ट्रांग, बट यू डोंट वांट द मेटल टू बी टू स्ट्रांग। थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि मतलब चेयर है, क्योंकि अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी तो वो क्रैक कर जाएगा। सो इट्स टू स्ट्रॉन्ग जब होगा ना तो वो फिर ब्रिटल हो जाएगा। ब्रिटल का मतलब है कि इफ यू ट्राई टू बेंड इट, जैसा मैनुअल कवर्स होते हैं, ठीक है, गटर्स के कवर्स होते हैं, दे मेड आउट ऑफ वेरी रॉ फॉर्म ऑफ, या इवन अगर वो स्टेज लाइक आयरन स्टेज होती है, उसके नीचे जो फ्लोर होता है, दैट्स मेड आउट ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ स्टील, रॉ फॉर्म ऑफ स्टील। तो उनका मसला ये है कि उसको अगर बेंड करने की, उसके ऊपर अगर फोर्स ज्यादा जोर से अप्लाई हो जाती है तो वो क्रैक कर जाता है, तो दे बिकम ब्रिटल। तो थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो हाई कार्बन स्टील इतना वो ज्यादा एलॉय बन जाता है कि इट लूजेस ऑल फॉर्म ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, ऑल सॉर्ट्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, एंड इट्स टू स्ट्रॉन्ग। तो इसको यूज कहाँ पे करते हैं? इसको यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन के अंदर। मतलब एक सिंपल एग्जांपल, ये शवल, गार्डनिंग टूल्स, व्हील बैरो। ठीक है, रफ रॉ यूसेज, but you won't make a car out of it. Second one is your mild steel. अच्छा, mild steel is known as low carbon steel, but it's still an alloy. Steel में होता क्या, आयरन होता है, मोस्टली आयरन होता है, and you add carbon to it. Now, low carbon steel जो होता है, that's, you don't add too much carbon to it. So I mean, it is an alloy, but it's not that strong of an alloy. But जितना ज्यादा मिक्सचर होगा ना, उतना strong alloy होगा. So mild steel is slightly softer, a slightly softer version of steel, or slightly more malleable. Remember, वो English soft is not the correct word. ठीक है, जैसा मैं अपनी English use कर रहा था, don't use that. Slightly more malleable. Malleable is the technical word for that. Slightly more malleable and ductile. तो उसमें थोड़ी बहुत flexibility होती है. So this is where you make car bodies from. ठीक है, कि थोड़ी बहुत flexibility, you want that. You want और फ्लेक्सिबिलिटी से ना उसके अंदर ये जो मेटल्स होते हैं ना, उनके अंदर वो भी होता है, एक स्प्रिंग लाइक नेचर होती है। मतलब अगर रूलर को आप बेंड करो ना, तो उसको वो वापस सीधा हो जाता है, और इट स्टार्ट्स टू वाइब्रेट लाइक अ स्प्रिंग। स्प्रिंग भी यही करता है। तो यू वांट सम फॉर्म ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, कि अगर एक चेयर के ऊपर ना एक भारी बंदा बैठ जाए ना, तो चेयर के अंदर चेयर के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होता है कि वो उसको एडजस्ट कर ले। और so you want it to be strong but not too strong. Up a third type is there's a third type of steel which is, अभी तक हमने याद रखो एलॉय का स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा हमने, बस ये पढ़ा है कि एलॉय जो होते हैं स्ट्रॉन्गर होते हैं। अभी तक हमने ये नहीं पढ़ा कि वो भाई स्ट्रॉन्ग होते क्यों है, वो भी हम उसका स्ट्रक्चर वगैरह बाद में पढ़ेंगे। पहले हम ये एलॉयज की टाइप्स पढ़ लें। नंबर थ्री इज स्टेनलेस स्टील।
अच्छा यहाँ तक सारा क्लियर है? कासिम, मिनाहिल, इज दिस क्लियर? नूर क्लियर है? Yes. Yes, sir. अच्छा, स्टेनलेस स्टील जो है वो स्टेनलेस स्टील क्या है? स्टेनलेस स्टील इज आयरन प्लस कार्बन प्लस बीच में ना क्रोमियम डाल देते हैं। अच्छा, द ओनली डिफरेंस in other types of steels and stainless steel is कि stainless steel does not rust. That's it. It's very unreactive. मतलब पानी डल जाए, कुछ भी डल जाए, does not rust. Usually make your spoons out of it. Spoons, cutlery, कैंचियाँ इससे बनी होती हैं, ठीक है? तो watches are made out of stainless steel, ठीक है? So you have these stainless steels that don't rust. पानी लगने से ना nothing happens to them. उसकी रीजन ये होती है कि उसका एलॉय से तो कोई ताल्लुक नहीं है, उसकी बस रीजन ये होती है कि क्रोमियम जो है ना वो टॉप के ऊपर ना एक शाइनी लेयर बना देता है। मतलब स्टेनलेस, लेट्स से स्टील का पीस है, तो क्रोमियम एयर में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ना क्रोमियम ऑक्साइड की लेयर बना देता है। एंड दैट लेयर प्रोटेक्ट्स इट। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, ठीक है? तो ये बस एक बात पता होनी चाहिए कि स्टेनलेस स्टील भी एक चीज होती है। तो ये तीन टाइप्स के स्टील हो गए। आयरन और कार्बन मिलकर स्टील बनाते हैं। जितना ज्यादा कार्बन होगा उतना वो स्ट्रांग होगा। तो हाई कार्बन जो स्टील होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। इतना भी स्ट्रांग नहीं चाहिए कि वो क्रैक कर जाए। तो गटर के ढक्कन वगैरह उससे बने होते हैं, मतलब उसको आप बेंड नहीं कर सकते। बेंड करोगे क्रैक कर जाएगा। माइल्ड स्टील अक्सर जगहों पे आपको चाहिए कि उसके अंदर स्प्रिंगीनेस हो स्टील के अंदर, ठीक है? चेयर्स वगैरह, यू वांट देम टू बी फ्लेक्सिबल सो दैट दे कैन एब्जॉर्ब इम्पैक्ट, कार बॉडीज एक्सेट्रा। तो उसके अंदर थोड़ा सा कार्बन की कंटेंट या मिक्सचर जो होता है वो कम होता है ऑफ स्टेनलेस स्टील। अच्छा, फिर there are two more alloys. Does anyone know the names of two more alloys which you need to know? Any idea? कोई और alloy राफे कोई पता है? कासिम, हमजा, any name of an alloy? नूर? No, sir. ब्रॉन्ज, मतलब पता तो होगा, बस अभी याद नहीं आ रहा होगा। ब्रॉन्ज एंड ब्रास, ठीक है? remember the names and the composition of these two alloys. There's bronze and brass. Bronze is a mixture of copper plus tin. Tin is Sn. And the other one is brass, which is a mixture of किसका mixture है? Copper plus zinc. ठीक है? Zn. ये दोनों याद रखते हैं, ठीक है? You'll be asked about them. ब्रॉन्ज के बारे में और ब्रास के बारे में, ठीक है? अगर हिस्ट्री भी पढ़ो ना, देयर वाज अ ब्रास एज तो नहीं थी, ब्रॉन्ज एज होती थी। ब्रॉन्ज एज और आयरन एज। मतलब आयरन एज में ना अपने ह्यूमंस ने ना स्टील बनाना सीखा था। ब्रॉन्ज एज के अंदर दे स्टार्टेड मेकिंग टूल्स आउट ऑफ ब्रॉन्ज। तो कॉपर और टिन का मिक्सचर था। अब ये कि एंड में जाके ना पढ़ते कि ये स्ट्रॉन्ग क्यों है। तो अभी तो खैर टाइम थोड़ा कम है, लेकिन व्हाई आर दे स्ट्रॉन्ग? तो स्ट्रक्चर ऑफ एन एलॉय कि मिक्सचर बनाने से स्ट्रॉन्ग क्यों हो जाता है? अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ alloy. What happens is कि if you have copper plus zinc, ये brass की बात करें, they're obviously a mixture, तो दोनों metals हैं and different sized. I mean, they're going to be different sized atoms. मतलब obviously different होंगे, हर atom का size different होता है। कुछ के पास electrons कम होते हैं, कुछ के पास electrons ज़्यादा होते हैं। So it depends कि some would have some atoms would be bigger, some atoms would be smaller in size. So if I start drawing the structure,
तो मैं स्ट्रक्चर उसी तरह बनाऊंगा, बस ये होगा कि अब सारे मेटल के एटम्स है ना, कुछ बड़े और कुछ साइज में छोटे हैं। छोटे वालों को थोड़ा सा एग्जैजरेट कर लेते हैं, ज्यादा छोटे हैं, ठीक है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर है, इस वाले को थोड़ा और छोटा कर देते हैं। अच्छा, सो बाकी सब कुछ वही है कि इट्स सेम मेटालिक स्ट्रक्चर, लेकिन क्योंकि डिफरेंट एटम्स हैं तो डिफरेंट एटम्स के साइजेस भी डिफरेंट होंगे, कुछ बड़े होंगे कुछ छोटे होंगे। इसको थोड़ा सा चलो सही है। अब करते हैं क्या, मेटल्स मेटल्स दे लूज इलेक्ट्रॉन्स। तो जहां कॉपर ने लूज किया, जिंक ने भी लूज किया इलेक्ट्रॉन, तो ये छोटा वाला लेट्स से जिंक है, ठीक है। सारों ने इलेक्ट्रॉन लूज किए, और जब इलेक्ट्रॉन लूज किए तो ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रॉन्स ने आके उनको अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रॉन्स बीच में कहीं स्टक है एंड दे स्टार्टेड अट्रैक्टिंग देम। तो ऑल ऑफ देम, इधर भी इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है सारों को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब्दुल्ला, इज दिस क्लियर? Yes, sir. अच्छा, अब ये सारे ना आके ना दे ऑल, वो इलेक्ट्रॉन सारे पॉजिटिव आयंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं, सारे आ रहे हैं करीब करीब। अच्छा, वन थिंग दैट यू वुड नोटिस इज, अच्छा इधर बीच में इलेक्ट्रॉन्स डालने पड़ेंगे। वन थिंग दैट यू वुड नोटिस इज कि, अच्छा उसका कलर ही चेंज हो गया, 1 सेकेंड, ये जाके इधर आ गया, चलो सही है, ये इधर आ गया। अच्छा, वन थिंग दैट यू वुड नोटिस नाउ इज कि जब डिफरेंट साइज्ड, अच्छा जब डिफरेंट साइजेस होंगे ना, द स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी हैपहैज़र्ड, but it's an irregular lattice. It's still a metallic lattice. दोनों के स्ट्रक्चर में क्या फर्क था? वो मेटालिक लैटिस किधर गया? पीछे जो हमने बनाया था, इट वाज अ रेगुलर, ये जो पिछला मेटालिक लैटिस था, जब एक ही टाइप के एटम होंगे, सारों के एक ही साइजेस होंगे, तो अरेंजमेंट जो होगी दैट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी रेगुलर, सारे बड़े नीटली एक दूसरे के साथ अरेंज्ड होंगे। लेकिन जब मिक्सचर होगा ना, मिक्सचर में एक एटम छोटा होगा एक एटम बड़ा होगा, तो फिर जो आपका लैटिस बनेगा ना, दैट्स गोइंग टू बी irregular. So what you're going to write is that due to different sized atoms, an irregular metallic lattice is formed. तो irregular haphazard metallic lattice is formed. और अब एक मेजर जो मसला होगा वो ये होगा कि जब आप फोर्स अप्लाई करोगे ना, तो ये स्ट्रॉन्ग क्यों होता है? जब आप फोर्स अप्लाई करोगे ना, तो देयर नो लेयर्स, जैसा पिछले केस में ना लेयर्स होती थी। जब पिछले केस में हम मैलेबल वगैरह पढ़ रहे थे ना, तो लेयर्स होती थी, वो सारे एक ही साइज के होते थे और लेयर्स होती थी, और वो बड़े आराम से स्लाइड कर जाते थे, स्लिप और स्लाइड कर जाते थे, क्योंकि वो बड़ी नीट अरेंजमेंट होती थी। अब मसला ये कि जब आपके पास एक हैपहैज़र्ड स्ट्रक्चर होगा ना, एंड इट्स गोइंग टू बी इर्रेगुलर, तो यहाँ से फोर्स अप्लाई करो तो ये आगे स्लिप ही नहीं कर सकता, क्योंकि वो आगे फंसे पड़े हैं सारे, एवरीथिंग इज इर्रेगुलरली अरेंज्ड, सो you can't really kind of push them around. तो इसलिए it's going to be strong. You can't bend it, you can't reshape it, you can't hammer it into different shapes. Not that easily. मतलब ज्यादा force apply करनी पड़ेगी, क्योंकि layered structure नहीं है। तो due to different sized atoms, and irregular metallic lattice is formed, and layers would no longer be able to slip and slide easily. Slip and slide easily. Pure metals के अंदर वो बड़ा easily slip and slide कर सकती थी। ये आखिरी point clear है सारों को? राफिक clear है? कासिम, अब्दुल्ला, नूर, is this clear? Yes. Yes, sir. चलो ठीक है, Yes, एलोइस sir. खत्म,
यस चलो ठीक है, एलओएस खत्म हो गए। हम कल कंटिन्यू करते हैं विद कोवलेंट बॉन्डिंग, वो मैंने थोड़ा सा दोबारा करना है, ठीक है? चले ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। Office. Will we have class tomorrow? सर मैं बता देता हूँ कल सर, मोस्ट लाइकली है क्लास, Okay, sir. ठीक है? किसी और ने कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछा? सर मैंने Yes. आपसे कुछ पूछना था। हाँ जी, सर एक्चुअली मेरे ना अभी मिड टर्म्स आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं पूछा था अगर आपके पास पहले से टॉपिकल पास पेपर सॉर्ट आउट हुए हुए हैं ना, हाँ हाँ मेरे पास होगा। तो पूछना था अगर आप माइंड नहीं करेंगे तो आप मुझे फाइल्स भेज देंगे ईमेल से। ठीक है मैं भेज देता हूँ, मुझे बस बता दो कि कौन से चाहिए। ठीक है सर।